Good morning, students. I am Sunana from the Maths Infinity. Today we are continuing with our topic quadratic equation. In my previous video, I have already discussed about the quadratic equation, what is quadratic equation, then how to find the solution of quadratic equation. We have three methods of finding the solution of quadratic equation. First one is factorization method, second is complete square method, and today we are discussing about third method, that is quadratic formula. You can go through my videos and check that how we find the roots by complete square method and by factorization method. Today we are discussing about quadratic formula. What is quadratic formula? For this we will directly apply this formula. Suppose this is our quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. A cannot be equal to 0. This is our quadratic equation. And what is quadratic formula? Through the quadratic formula we directly find the value of our value of x. So what is value of x? Minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a by 2a. So what we have to do, we have to take directly value of abc from the given quadratic. जो हमें quadratic equation given होगी कि इसके solutions find out कीजिए या इसको simplify कीजिए, उसमें से directly abc की value हम इस equation में put करेंगे और यहाँ से हमें हमारे solution मिलेगा. तो क्या solution एक ही होगा? quadratic equation के तो 2 solutions होते हैं, यहाँ से तो एक ही मिल रहा है. No, यहाँ भी हमें x की 2 values मिल रही है. How? We have put on here sign plus and minus. So here when we take plus sign we get one solution. When we take this minus sign, this term with minus sign, we get our second solution. So let us take one equation, one quadratic equation. Our quadratic equation is x square plus 3x plus 2 is equal to 0. So from here value of a is, from this quadratic equation, value of a is 1, value of b is 3 and value of c is 2. Now directly put our quadratic formula, directly put these values in quadratic formula. What is quadratic formula? Quadratic formula. What is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus of square root of b square minus 4ac by 2a. So put value of b is, put minus sign here, value of b is 3 plus minus b square, 3 3s are 9 minus 4 into 1 into 2. So here 2 into 1 because value of a is 1 here. So here is minus 3 plus minus 9 minus 8 because 4 into 1 into 2 is 8 by 2. So we get minus 3 plus minus square root of 1 by 2. We know that 9 minus 8 is 1. We know that square root of 1 is 1. So directly write here x is equal to minus 3 plus minus 1 by 2. So x is equal to minus 3 plus 1 by 2. Firstly take plus sign, then take minus sign. So from here x is equal to minus 3 minus 1 by 2. So from here we get minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1 and from here we get minus 4 because minus 3 minus 1 is minus 4. Minus 4 by 2 is minus 2. So we get our two values of x, either two solutions of x. Same यही examples हमने factorization method के लिए लिया था, same यही method हमने complete square के लिए लिया था और same यही method हम quadratic formula के लिए. We get the same answer in all the three cases. So this is directly we have to put our values here. So with the help of this quadratic formula we can find the solution of any quadratic equation, and this method is best for finding the solution of quadratic equation. In this method you just see this, we can write here minus b plus minus of square root of d by 2a. Why we have written here d? What is d? D is discriminant. D is discriminant. D is discriminant. Value of D is b square minus 4ac. Value of D is b square minus 4ac. इसका क्या रोल है? What is this discriminant?
the nature of roots we will define with this quadratic, this discriminant. nature of roots की रूट हमारे कैसे होंगे, रूट कैसे मीन्स ये 3 केसेस देगा हमें, 1 2 3 व्हेन वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, जब ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, व्हेन दिस वैल्यू इज, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, when d is equal to 0 and when d is less than 0. what will happen when d is greater than 0? roots कैसे होंगे, roots are real and unequal. roots are real and unequal क्योंकि d की जो वैल्यू होगी x is equal to minus b plus minus square root of d by 2a. अगर d की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, सो वी विल गेट डिफरेंट. वैन जब ऐड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, जब इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग आंसर मिलेगा. सो रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड d इज 0, जब d है ही नहीं, व्हेन d इज नॉट हियर, ना कुछ ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे, सेम होंगे. रूट्स आर real and equal. Roots are real and equal. When d is less than 0, so we get no real roots. So what is meaning of no real roots? When we find value minus b plus minus square root of d by 2a, जब ये वैल्यू लेस देन 0 मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, -5. Negative number, -5 we can take, -4 example I am taking -5. Within square root नेगेटिव साइन अब तक हमने देखा ही नहीं है. स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर अभी तक हमने रीड किया ही नहीं है. ये नंबर आएगा हमारा 11th स्टैंडर्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में. वहां इस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. दिस इज इमेजिनरी नंबर. सो वी विल रीड दिस टाइप ऑफ नंबर इन अवर हायर क्लासेस. सो यहां अभी तक हमने स्क्वायर रूट के अंदर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखे, नेगेटिव नंबर हमने देखे नहीं है. सो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स, दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. ये रियल रूट नहीं है. सो डी से हम क्या बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स. डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा. सो हम सिर्फ डी फाइंड आउट करते हैं. वी ओनली फाइंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. यहां से अगर d ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0, इन 3 कंडीशंस पे हम डिफाइन करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा. Understand? So this type of questions are most important in our 10th standard class. So in this way we almost have completed our chapter, but word problems are left, so we will discuss in our next topic. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.